खामोश है दिल भरी महफिल चिल्लाना नहीं अच्छा। खामोश है दिल भरी महफिल चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों। कमाल की होती है, सर झुकाने की खूबसूरती क्या कमाल की होती है। जमीन पर सर रखी और दुआ आसमान में कबूल होती है। और आपके सामने एक नेक्स्ट सर आपको और देना चाहेंगे और ध्यान देंगे आप लोग। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कितना बाजुए कातिल में है। देखना कितना बाजुए कातिल में है। अब इब्रार सर से मैं दावत सुकून देना चाहता हूं कि वो अपने आन बान शान के साथ वो रेडी हो जाए। और मैं डॉक्टर इब्रार सर से मैं इस ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन फिर भी और समय को देखते हुए सारी बातें सारी पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा सिर्फ एक झलक दिखला दें। और ये डॉक्टर सर जो है आपके सामने रूबरू खड़े हो गए हैं। इससे पहले एक और सर आपको बता दें कि मुस्कुराहट का कोई, देखिएगा सर के लिए, सर का जो मुस्कुराहट होता है वो सर के लिए क्या कहता है सर कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। कुछ लोग कोई रिश्तों का तो कोई तोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लेकिन हर मिल जाते हैं रास्ते में कई लोग, लेकिन इब्रार सर के जैसा कोई मुलाकात नहीं होता। तेरे गुलशन के हर फूल कुमला गए। आवाज जा रही है? नहीं, हम यही सुन। लेडीज एंड भाई, अगर आप लोग का आदेश हो, हुक्म हो, तो हम अंग्रेजी में बोलते हैं और फिर बीच में उसका हिंदी भी कर दिया करेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये होनहार बच्चे बैठे हुए हैं। इंग्लिश हमारी ही ज़बान है, ये पूरी दुनिया की ज़बान है और दुनिया में हम लोग भी रहते हैं। ये कोई अंग्रेज ये बच्चे नहीं, शांत रहिए, नहीं खामो, नहीं, नो, क्यों नो, खामोश। खामोश है दिल भरी महफिल चिल्लाना नहीं अच्छा। खामोश है दिल भरी महफिल चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो इंग्लिश अपनी ही जबान है, लोग बोलते हैं विदेशी जबान है। विदेशी जबान नहीं है, ये अपनी जबान है, क्योंकि ये पूरी दुनिया की जबान है और हम लोग दुनिया ही में रहते हैं। ये मॉडर्न भी दुनिया ही में है, इसलिए अंग्रेजी कोई विदेशी जबान नहीं है, पूरी दुनिया की जबान है। तो कोई अंग्रेजी बोले तो ऐसा नहीं कि वो विदेशी जबान बोल के निकल गया, ऐसी कोई बात नहीं है ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, तेरे गुलशन के हर फूल कुमला गए। तेरे गुलशन के हर फूल कुमला गए, जर्द पत्ते हुए फूल मुरझा गए। बाग के सारे सब्जे हवा खा गए, सूख जाने के बिल्कुल करीब आ गए। बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबां कहाँ खो गया। वाह नहीं करना है, ताली बजा सकते हैं बट वाह नहीं करना, दैट इज आउट ऑफ द डिसिप्लिन। नाउ टुडे द एंटायर नेशन इज celebrating the Teachers' Day. As I want to tell you that time to time in India we are celebrating the festival. Festivals are coming to teach you, teach me. Today we are celebrating the Teachers' Day. That is the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Before me, you have given very long lecture about the lifestyle of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. First of all, of course he was the president, no doubt.
But we are celebrating the Teachers' Day not due to the fact that he was the president, but fact is that he was the teacher. First of all, he was the teacher, and he was an ideal teacher. Teachers are the fate maker of the students, and students are the fate maker of the country. We, the teachers, and the students are making the country. So, there is great responsibility, there is great liability on the head and shoulder of the teachers. As we will be, as the teacher will be, so will be the student. So it is very important that we should always try our best to take the calculated step in every fold of life, because your every activity is being followed by the students, by the children. So it is very important that we should always be careful about first of all ourselves. डाली गई न अपने गिरेबां पे नजर, डाली गई न अपने गिरेबां पे नजर, दुनिया हमारे दाग मगर देख रही. So it is very important. First of all, we should charactify and modify ourselves. We should try our best to become the ideal teacher. Who is the ideal teacher? Ideal teacher is having many qualities. We must be the teacher of the quality. If the teacher is the teacher of the quality, automatically the students will be the students of quality. The first quality of the teacher is that we should always respect the time. We must be punctual. We must be punctual. If the teacher is punctual, automatically the students will be punctual. This is the first quality of the ideal teacher. The second quality of an ideal teacher is that we should always maintain our character. It is said about the character that wealth is gone, nothing is gone, health is gone, something is gone, and if the character is gone, everything is gone. So we should always maintain our character. Our character should be just like Lord Krishna. Our character should be just like Lord Krishna. The young girls were teasing and peeping Lord Krishna, but does not matter. Ultimately, he became the Lord and God. Mr. Duryodhan, in the time of Lord Krishna, Mr. Duryodhan wanted to loot the virginity of Draupadi ji. Draupadi ji requested from Lord Krishna that, oh Lord Krishna, where you are? This Mr. Duryodhan is wanting to loot my purity and virginity. Then the merciful hand of Lord Krishna came on the head of Draupadi ji. Lord Krishna gave his merciful hand, sent his merciful hand on the head of Draupadi ji. And Mr. Duryodhan was untying the sari of Draupadi ji, then he could not untie, and ultimately Duryodhan started chanting the slogan that Nari hai ki sari hai ki nari hai, nari ki sari hai ki sari ki hi nari. So what I want to say that it is very important that always we should maintain the character. This is the second quality of a teacher, of an ideal teacher. Now the third is that always we must maintain the discipline. It is said that discipline makes a nation great. I would like to tell you that discipline makes a man great. Where there is discipline, there is success. So the teacher must try his best to live under the periphery and boundary of that discipline. If I will maintain that discipline, automatically the students will maintain that discipline. So discipline is a very strong weapon that we must follow. Then after that, students will follow that, and ultimately they will become the ideal student, ultimately they will become the ideal citizen of the country. Now, the next quality of an ideal teacher is that always we should try our best to give encouragement to the students. बराबर बच्चों को हिम्मत दीजिए, बराबर बच्चों को हिम्मत दीजिए. It is the history of the world that all the big and great work has been done by the poor.
ये दुनिया की कहानी है, जितना भी बड़ा बड़ा काम हुआ सब गरीब लोग किया है। क्लैपिंग करो, जोरदार क्लैपिंग We the करो। poor sir, we the poor sir very strong। हम लोग गरीब लोग बहुत मजबूत होता है। हम लोग गरीब को ना तो भूख लगती है, ना तो धूप लगती है, ना तो ठंडक लगती है, ना तो कहीं कुछ तकलीफ का हम लोग को एहसास होता है। और जो दुनिया बड़ा बड़ा काम करना चाहते हैं उनको अंदर से those who want to do the big and great work in their life, they must be very strong from inside, and we the poor are very strong from the inside. So never think that we are living in Modern is a very small place, we are living in Champi and Bankitta, very small place. What we can do from that? See the life of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He took birth in a very simple family, garib family, poor family, and ultimately he sat down on the biggest chair of the country. What is that? He fought from the poverty. गरीबी से वो लड़े। Don't fear from the poverty. गरीबी से डरने की आवश्यकता नहीं है। Always fight from the poverty. Always fight from the obstacle. Always fight from the stumbling blow. Then tomorrow will be your day. कल आपका दिन हो जाएगा। So we should learn from the life of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a poor boy, but he took the poverty as a challenge. He invited the problem. You problem, come, I will see you. And then after the see where he went on. So it is very important that we the teachers should always encourage us. हम शिक्षकों को बराबर बच्चों को हिम्मत देनी चाहिए कि तुम ही कुछ कर दोगे। Every power is in you. आप में सारी शक्ति। वक्त का बेर हम इतिहास बदल सकते हो। वक्त का बेर हम इतिहास बदल सकते हो। पुण्य में पाप का विश्वास बदल सकते हो। अपनी बाहों पर ही भरोसा कर लो तो ये तो धरती है, तुम आकाश पर। जोरदार क्लैपिंग करो, जोरदार क्लैपिंग करो सभी लोग। मर्द मैदान बन अपना जौहर दिखा कर बुलंद अपने बाजू को मत खौफ खा। गोलियों से न डर, खोल सीना जरा, काम हिम्मत से ले आग में कूद जा। तेरी हिम्मत ही तलवार बन जाएगी, नार नमरूद गुलजार बन जाएगी। So what I want to tell you that when today we are celebrating that Teachers Day, then we should learn from the life of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. When we celebrate Muharram, then we should learn from the life of Hassan and Hussain. When we celebrate Dashahara, then we should learn from the life of Devi Durga Ji. Devi Durga Ji was a lady, but very surprising matter is that she murdered the 5 notorious giants, very powerful giants: Mahishasur, Chanmunda, Madhukota, Shubh Nishubh, and Rakbi. Being a lady, she has done very great work, powerful work in her life. So don't only beating the drum, don't only chanting the slogan, don't only enjoying the delicious food in the house when the festival is coming, but side by side we must be learning from the life of the goddesses, Peer, Fakir, prophets and great men. When we celebrate Eid Miladun Nabi, then we should learn from the life of Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He came in this world to remove the darkness and distribute the light in this world. When we celebrate Ram Navami, then we should learn from the life of Lord Ram. He has given a very good example in this world. It is not a matter of Hindu and Muslim. ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। कोई भी अच्छा काम किया है, उस अच्छे काम को हमको सबको सीखना है। May be Hindu, may be Muslim. Good is good for all. Good is good for all. Bad is bad for all. अच्छा सबके लिए अच्छा है, बुरा सबके लिए अच्छा है। Mr. Raman was Hindu, he was Brahman, he was intellectual, but our Hindu brothers are burning his effigy. रावण हिंदू था, ब्राह्मण था, विद्वान था, आज हिंदू भाई उसका पुतला जलाते हैं। Why? Because he had done the bad work in his life. He abducted Devi Sita ji and he insulted the woman. So it is not the matter of Hindu and Muslim. It is the matter of good and bad. If you do the good work, everyone will appreciate your work.
And if you do the bad work, everyone will hate from you. So it is very important that when we are celebrating any festival, maybe religious, maybe national, maybe any festival, but we should be learning from that festival. Then after that, today the entire nation is celebrating the lifestyle of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. No doubt, we should give the lecture, we should chant the slogan, but side by side, we should learn and we should think that how he became and how he sat down on the biggest chair of the country. Follow his. All of you will not become the president. Seat is limited. हम लोग अब सब अच्छा लोग नहीं बन जाएंगे राष्ट्रपति, बट यू कैन, इफ यू लिवर, यू कैन बिकम इंजीनियर, यू कैन बिकम डॉक्टर, यू कैन बिकम प्रोफेसर, यू कैन बिकम मजिस्ट्रेट, यू कैन बिकम डीसी, एसपी, एसडीओ, दरोगा, पीडीओ. Because it is said that labor never goes in vain. मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है. It will give you the great and powerful fruit in your life. So learn. Not only today, but when we are celebrating any festival. So it is very important that we should always be careful in our life, and we must be always trying our best to be take the step ahead. Go ahead. इसका पता ना पूछो, बस आगे बढ़े चलो. इसका पता ना पूछो, बस आगे बढ़े चलो. होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ. Go ahead. A day will come that you will reach the destination. चलते चलो. जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम. The name of life is to go ahead. A day will come that you will reach to your goal. So it is very important that we should always try our best to make our life a successful life. Life is very short but very meaningful. ये जिंदगी छोटी है लेकिन कुछ करने के लिए. We have got the life to do something in our life. So do something. Just like Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He is not here. He has died many years before, but we are remembering his name. वो नहीं हमारा बीच में, but उनका नाम को हम याद कर रहे हैं. Why? Because he has given his great contribution for the country. वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, मैं समझोगे तो मिट जाओगे. हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तान. So what I want to say that always we should do anything for the nation, just like Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. मोहब्बत है अपने वतन से, हमें मोहब्बत है अपने चमन से, हमें प्यार अपने हर एक गांव से, घने बरगदों की घनी छांव से. सलामत रहे अपने दस्तो दमन, रहे मुस्कुराता हमारा वतन. So what I want to say that we should always try our best to take any step. We should share the blood for the nation. We should do any work for the nation. We should take every breath for the nation, just like Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. So it is very important. There is limitation of time. समय की थोड़ी किल्लत है, and we should respect the time. About the time, I would like to tell you that वक्त खामोश सही फिर भी सदा देता है. आईना बन के हर एक चेहरा दिखा देता है, और वक्त जब बदलता है तो देखा होगा एक मुख्तार को मजबूर बना देता है. So ultimately and eventually, I would like to tell you that today we could take oath. आज हम लोग को शपथ लेनी है, कसम करना है कि we will make our life a successful life. अपनी जिंदगी हम सफल बना कर रहेंगे, and for that we will have to do the great work and hard work in our life. So thank you very much.